श्री श्री मंगलाचंडिका ध्यानम् यैषा ललितकान्ताख्या देवी मंगलाचंडिका वरदा भयहस्ता च द्विभुजा गौरा देहिका रक्ता पद्मासनस्था च मुकुटांगदा मंडिता रक्ता कौशेय वस्त्रातो स्मिता वक्त्रा शुभानना नवयौवन संपन्ना चारवांगी ललिता प्रभा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वा पूज्ये देवी मंगल चंडिके ऐं क्रूं फट् स्वाहा मंगला चंडिका स्तोत्रम् श्री शंकर उवाच रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मंगला चंडिके हरि के विपदाम राशे हर्षा मंगलकारिके हर्षा मंगला दक्षे च हर्षा मंगला चंडिके शुभे मंगला दक्षे च शुभे मंगला चंडिके मंगले मंगलार्हे च सर्वमंगला मंगले सतां मंगलदे देवी सर्वेषां मंगलालये पूज्ये मंगला बारे च मंगलाभीष्टदेवते पूज्ये मंगला भूपस्य मनुवंशस्य सन्ततां मंगलाधिष्ठात्री देवी मंगलानां च मंगले संसार मंगलाधारे मोक्ष मंगलदायिनी सारे च मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणां प्रतिमंगला बारे च पूज्ये च मंगलप्रदे स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मंगलाचंडिकां प्रतिमंगला बारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः देव्याश्च मंगलस्तोत्रं या शृणोति समाहितः तान् मंगलं भवेत् शश्वन्ना भवेत् तदमंगलम् प्रथमे पूजिता देवी शिवेन सर्वमंगला द्वितीये पूजिता देवी मंगलेन ग्रहेण च तृतीये पूजिता भद्रे मंगलेन नृपेण च चतुर्थे मंगले वारे सुंदरीभिश्च पूजिता पंचमे मंगलाकांक्षी नरैर्मंगला चंडिका पूजिता प्रति विश्वेषु विश्वेशा पूजिता सदा ततः सर्वत्र सांपूज्या सा बभूव सुरेश्वरी देवादिभिश्च मुनिभिर्मनुभिर्मानवैर्मुने देव्याश्च मंगलस्तोत्रं या शृणोति समाहितः तन्मंगलं भवेत् शश्वन्ना भवेत् तदमंगलम् वर्धते तत्पुत्रपौत्र मंगलिष्ठां दिने दिने इति श्री ब्रह्मवैवर्ते
महापुराणे प्राकृतिखण्डे नारायण नारद संवादे मंगलाचण्डिका स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। मंगलकवचम्। ईश्वर उवाच शृणु देवी महेशानि भौमस्य कवचं मुदा पठनाद्धारणाद् यस्य भौमिरिष्टां प्राणस्सति अस्य श्रीमङ्गलमहाग्रह कवचस्य भरद्वाज ऋषिः षडष्टका पंक्तिश्छन्दः श्रीमङ्गलो देवता मंगलग्रह प्रीत्यर्थं पाठे विनियोगः। आम आम मम शिरः पातु ईं ईं पातु कपालकम्। ॐ ॐ कर्णौ सदा पातु ह्रीं ह्रीं मे पातु भालकम्। लीं लीं पातु सदा गण्डो ऐं ऐं पातु श्रुति मम। आं पातु मम हृदय आं सर्वाङ्गं ममावतु। इदं भौमस्य कवचं प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो ग्रहपीडा न दारुणा। भौमवारे निशाभागे उपवासं करोति यः ऋणग्रस्तो ऋणरेखा मंगारेणैव कारयेत्। प्रोञ्जयेद् वामपादेन ऋणं त्यक्त्वा धनं लभेत्। कवचं पठेद्देवी निशामध्ये वरानने। प्रातः स्नात्वा द्विजानभ्यर्च्य पारायणं च स्वयञ्चरेत्। एवं समाप्तं देवेशी यः कुर्याद् भक्तिभावतः ऋणान्मुक्तो महेशानि धनमाप्नोति पुष्कलाम्। भूर्जापत्रे तिमां विद्यां रक्तचन्दनमिश्रिते सिंहमूलान्नितां कृत्वा ताम्रस्तां धारयेद् यदि क्षताव्रणाद्य यावन्तो दोषा न सन्ति पार्वती। इति श्री साधु संकलिनी तंत्रे मंगलकवचम्।